So this video would be a very crisp video on how to apply to UK as an international student, as an Indian student particularly, and also थोड़ा in just बताऊंगा about Oxford and Cambridge. ठीक है? So a lot of students from the AV community recently like got into UK, and this year almost like I think 3 or 5 of them are already going to UK, and that's something. So उनसे मैंने थोड़ा personal advice लेके सब कुछ बना रहा हूँ. Yes, come to the point कि like what you need to apply for the UK. ठीक है? And the UK deadlines are similar as the normal like things like you apply while you're in 12th. The deadline for most things is January 12th or January 25. I'm not sure exactly. ठीक है? But there are different deadlines for Oxford and Cambridge, veterinary science, medicines and dentistry के लिए. And performing arts के लिए I think the deadline is around October 1st or something. ठीक है? The entire thing on the UCAS का thesis जो है, it's right here, so you can see the deadlines. ठीक है? For Oxford and Cambridge, the deadline is 15th of October. ठीक है? And for normal things, it's around Jan. So that's something. Now, थोड़ा बताना चाहूँगा about Oxford and Cambridge before we get to the main part. ठीक है? For Oxford and Cambridge, we are talking about a lot of great extracurriculars. Like, तुम सब कुछ एक साथ ही भरते हो. ठीक है? You choose Oxford in the UCAS choices. ठीक है? ये जो डैशबोर्ड आ रहा है तुम्हारे सामने, यहाँ पे तुम सब कुछ भरते हो. ठीक है? And UCAS dashboard takes around 15 to 20 minutes to fill it up. That's all it takes, guys. Now, पहली बात तो ये है कि UCAS एप्लीकेशन ऑक्सफोर्ड एंड कैम्ब्रिज के तुम पहले सबमिट कर देते हो, और उसके बाद बाकी 4 जो एप्लीकेशंस होते हैं इन UCAS you can only submit to 5 choices. That is 1. 5 से ज़्यादा नहीं कर सकते. So on the first choice you put in Oxford or Cambridge, and यहाँ पे भी एक twist है कि you can only apply to Oxford or Cambridge in 1 year. ठीक है? Like एक साल में तुम दोनों जगह पे अप्लाई नहीं कर सकते. And मामला इतना like a little bit of like अलग है चीज़ों से, is that you have to give admission test for Oxford or Cambridge and they have separate things. ठीक है? And in admission test के लिए you guys need to think it through very early. ठीक है? Admission test जो भी होता है, let's say physics के लिए मैं background. ठीक है? So I have to give the PAT. ठीक है? For physics and philosophy I have to give the PAT as well. For law I have to give the LNAT. All the links of किस टेस्ट में क्या देना है सब कुछ मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, देख लेना. ठीक है? And one important thing is कि registration for this test ends on 19th of September for most of them, so you have to think it a little bit in advance. ठीक है? That is something. कुछ सब्जेक्ट के लिए टेस्ट में ही लगते हैं. ठीक है? जैसे थियोलॉजी, रिलीजन ऐसा हो गया. ठीक है? बट कुछ के लिए लगते हैं. एंड टेस्ट में ऐसा नहीं कि तुम्हें फुल मार्क्स चाहिए. यू हैव टू लाइक क्लियर द कंपैरेटिव मार्क्स के लिए. ठीक है? सो दैट इज समथिंग. नाउ कमिंग टू पॉइंट कि लाइक ऑक्सफोर्ड एंड कैम्ब्रिज के लिए ये टेस्ट हो गया, ये सब कुछ हो गया. टेस्ट होते हैं अराउंड अक्टूबर. यू हैव टू साइन अप बिफोर लाइक September 19th. ठीक है? टेस्ट होने के बाद यू सेट फॉर द इंटरव्यू, यू आर सिलेक्टेड, एंड इंटरव्यू के बाद रिजल्ट्स आते हैं इन January 13th आई थिंक. अच्छा, January 12th और समथिंग, आई एम नॉट श्योर. ठीक है? सो दैट्स समथिंग. फॉर द नॉर्मल थिंग्स कि लाइक नॉर्मल एप्लीकेशंस कैसे स्टार्ट होते हैं सब कुछ. ठीक है? अर्ली ट्रिप इज द रियल की गाइस. ठीक है? बिकॉज इस साल पर्सनल स्टेटमेंट जो है ना वो चेंज हुआ है. ठीक है? पहले इट वाज अराउंड 4000 कैरेक्टर लिमिट का एक बड़ा सा ऐसे लिखो, बट this year it went down to 3 questions, which are these. So यहाँ पे the minimum I think character word limit is 350. So यहाँ पे तुम्हें ठीक से लिखना है. The first question is around कि क्यों major है, why major type essay है, similar in US. ठीक है? The second essay is basically about what qualification do you have for this type of courses, etc. ठीक है? And the third one is कि तुम्हारे extra curriculars क्या क्या है, like what have you done outside academic things. So that's a no. Now, yeah, pretty much that is something. UK tariff points जो होते हैं, convert the qualifications to points for eligibility. ठीक है? And if you are from CBSE or ICSE or state board, please research करो, ध्यान से research करो. ठीक है? And research कहाँ से करना है? Once you shortlist the universities, go to this university like page, and then you have to like go through the eligibility for the particular countries. वहाँ से तुम देखो कि क्या आ रहा है. ठीक है? The higher tariff points, it's better, obviously, right? So that is something. Basically, in the UCAS application, there are going to be like 3 particular sections. The profile, choices हो गया, that is different. Profile, एक होता है experience, एक होता है reference. ठीक है? प्रोफाइल में ये सारी चीज़ें होती हैं. ठीक है? And these are all self-explanatory, so मैं यहाँ पे explain नहीं करूँगा. One thing is कि यहाँ पे पैसे के मामले में generally you have to choose the other choice वाला option, because the other things like agency वगैरह जो भी है, but in most cases they don't apply. Secondly, experiences में the paid employment जो भी है वहाँ पे तुम फिर भी कर सकते हो, वहाँ भी कर सकते हो. So it's totally fine if you don't happen. अगर तुम्हारे पास है employment का proof वगैरह, you can definitely submit it, and that's all. That's add on to your application. The third one is references. References मतलब obviously यार तुम submit करो, and you guys will send an email to their email, and वहाँ से they will fill it up on their own. Predicted grades is much important, and it's only considered a part of your application because predicted grades inflated हो सकते हैं. ठीक है? So predicted grades मतलब if your school hasn't पहले नहीं दिया है कभी predicted grades और predicted mark sheet, then it's basically school header में लिखा रहता है कि this is a student of our school, and table format में लिखा रहता है कि these are the courses that he is taking for, and this is what we are predicting his marks would be.
एंड उसके बाद स्टैम्प रहता है, एंड दैट्स ऑल दैट इज. ठीक है, सो pretty much that is all. The application fee for UCAS is like 28.95 euros for this 2026 entry के लिए. If you have any more doubts in like filling up the application, Leap Scholar का बहुत अच्छा वीडियो है, so I will link it down. You can also check it here. ठीक है, so they have gone through the entire application कि क्या क्या करना है वगैरह वगैरह in very just in 5 minutes or less. So see that. And अभी के लिए इतना ही था. For the मनी पार्ट ना, स्कॉलरशिप्स फुल एड ऐसा कुछ नहीं होता यूके में, एंड इट्स वेरी वेरी हार्ड टू गेट. ठीक है, लाइक द रीच यूके स्कॉलरशिप एंड ऑल दैट स्टफ देयर लाइक एक आई एम नॉट श्योर 4 या 3-5 लोगों को मिलता है पर ईयर. ठीक है, एंड इट्स वेरी वेरी सिलेक्टिव. सो दैट इज समथिंग. IELTS एंड TOEFL इज एंड PT as the only things that are technically considered. DET काम नहीं करता यूके में, like almost like that. So that is one thing as well. So IELTS के लिए प्रिपरेशन लो और ठीक से दे लेना. And visa it's easier compared to US obviously, but यहाँ पे एक नया restriction है, so you can also check that out. And that's all for these things. If you have any doubts, comment कर दो. And if you are someone who wants to go abroad after birth, then join ATF and